हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये सिंपल सा एक प्रोफाइल पेज जो कि है सेटिंग के फॉर्मेट में। सेटिंग के टैब पे आकर के आपको ये पेज दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज द पेज वी आर गोइंग टू क्रिएट। दिस इज अ वेरी सिंपल डिज़ाइन गाइस, बट इसमें ये जो चीज़ है बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से आइकन्स हैं और इसमें थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा अपने को। बाकी की चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, ठीक है। So let's get started. I will go ahead with iPhone 14 plus 1. Okay, so one is the artboard none. Okay, तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ करते हैं, हम सिंपली स्टेटस बार लेके आते हैं, उसको लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे चीज़ों को लगा के उसको टेस्ट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और दैट द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज दिस। ओके, so you can see the way I am checking it here. Okay, so this is done, status bar is done. Now coming to this thing and this, so I will simply create this thing maybe like this. Okay, so this will remain here maybe, or let's say this settings, bold, इसको हम कर देते हैं हेल्वेटिका। ओके, फॉन्ट हम थोड़ा सा रखेंगे यहाँ की तरफ, इसको हम कर देते हैं 0 एंड इसको हम कर देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, सो मे बी लाइक दिस। एंड ये मुझे कलर थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है बेसिकली। और उसके बाद आता है ये आइकन, तो हम जाएंगे सीधे सीधे प्लगइन्स में और हम जाएंगे आइकॉनिफाई में। आइकनिफाई आई डोंट नो। इसके बाद हम डालेंगे एरो। एरो से हमको मिल जाएंगे बहुत सारे एरोस, तो हम देखेंगे हमको कहाँ पे मिल रहा है। ये एरो है, हम ये ले सकते हैं, बट लेट्स सी इफ वी कैन गेट स्टैंड अलोन एरो। दिस इज देयर, बट आई थिंक दिस कुड बी अ बिट lighter. So let's see a few more pages what we get. Yes, here's the thing that I was looking at. Okay, so इसका जो है 24 पिक्सल सही है, हम इसको कर देते हैं 6 पिक्सल। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ बाहर, मे बी लाइक दिस। एंड यस, इस पे हम कर देते हैं फिल का जो कलर है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम कर देते हैं मे बी 8 पिक्सल, 16 पिक्सल, मे बी 4 पिक्सल। yes, this thing is somehow not aligned, so maybe 2 pixel is enough. Okay, so yes, I guess this is done for the time. And let me check how it is appearing. This is appearing cool. You can share your feedbacks if you want, although I would love if you can share some feedbacks of yours. I really have no idea how this can be used, but I'm just designing it because I'm simply liking it. Okay, so I'm just giving you the tutorial the way. If you want, you can just, for the learning purposes, you can try many things, as many things you want. So this guy, if you look at the model pics, you can say clearly this is a kind of very outdated UI. However, we will make it in a way something different. So this is variably very big in the size, so we can say 108 maybe. This looks cool. All right, and let me put it 8 and yes, this much is looking fine. Now we will ठीक है, सो ये सही है, 20 पिक्सल डाउन है बेस से, जो स्टेटस बार आ रहा है फुल। और ये जो चीज़ है उसको हम कर देंगे नीचे, मे बी लाइक दिस। So this has already started looking better, a lot better basically. So let's see, jaws, JONES,
ONES. I'm sorry guys for my voice, मुझे हो गया है जुकाम, so गागरू. So I will put it like this. And इसका font size है वो हम कर देते हैं maybe 20 pixel. Alright, and again इसका जो font जो color है वो मैं रख देता हूँ similar to this. So we will be following this color only to entire app. Okay, इसको हम कर देते हैं 8. इसको हम कर देते हैं maybe regular 12. and इसको मैं कर दूंगा center align and 2013. wow, really. and इसको मैं लेके आता हूँ नीचे. now I will put it as account info and I will put it like this, left align. and so basically हम इसको करते हैं 16 pixel side. This is looking better now. Okay, so I will again copy this and I kind of make it a bit bigger, and this will go regular and 16. so I will make it link accounts and I will simply copy this arrow जो कि अपने पास है. ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं घुमा देता हूँ. मुझे लगता है इसका भी जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंस हो गया है, तो हम उसको भी चेंज कर देते हैं. नाउ कम्स द टाइम हम इसको भी जो इसका why should be, I think 16 pixel is enough, maybe, or maybe 12. okay, so मैं अगर इसको नीचे लेके आता हूँ तो what the heck, why it's not okay. I don't know, I guess some issue with the arrow I guess. so मैं इसको अभी के लिए निकाल देता हूँ फ्रेम से बाहर और मैं इसको कर देता हूँ maybe 14 pixel bigger and then I will simply make it auto layout. okay, and there is some issue you need to see. हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं, पहले इसको कर देते हैं अनग्रुप एंड ये तो जो एब्सोल्यूट पोजीशन है वो आ रहा है इस, जो कि मुझे चाहिए नहीं है. Let me see if I have used some arrows in my previous design, because that is kind of becoming problematic. So I guess no. Okay guys, so this is appearing like this. So what we will do, we will simply be kind of adding auto layout to in this also. No, it is not going to be like this. Basically what we will be doing, okay, 16 pixel now and we'll put it auto. I guess I don't know what issue. Oh, I think this absolute position was the issue guys, which is now fixed. So you need to check the issue that sometimes appears. Okay, so
if you know better ways, you can feel free to share. Okay, sometimes I struggle. So the next thing I will do, profile, and आपको बस simply करना है Control D and just keep changing the property values. Okay, and then language. Okay, so what I will do, I will do one more thing. I will simply make one more auto layout with 24 pixel. Now what will happen if I just simply increase the margin, so ये सिर्फ एक ही margin यहाँ से बढ़ेगा, इसको कर देते हैं fill container. Okay, so again I will simply put it like this, Control D maybe. Okay, or maybe you would say we'll have 16 pixel margin. 16 pixel margin हम लोग रखेंगे नीचे. Okay, and then Control D. This is better now. अब यहाँ पे हम लिख देते हैं support and email notification, and यहाँ पे है vibrate. Okay, अब ये चीज़ अपनी हो गई है fix. Cool. तो यहाँ तक का हो गया है, मुझे लगता है better. अब हम आते हैं यहाँ पे. मुझे लगता है बॉटम पे हमको 16 पिक्सल का मार्जिन हम दे सकते हैं और मे 24 पिक्सल. ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे एक स्ट्रोक ऐड और हम वो करेंगे बिल्कुल ही बॉटम पे. और इसका जो फॉन्ट कलर है, जो स्ट्रोक का जो कलर है, वो हम रखेंगे बिल्कुल लाइट. ओके, अगर आपको चाहिए है तो आप इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, सो दैट इट लुक्स फार्दर. ओके, और अगर आपको लगता है यहाँ पे भी स्पेस थोड़ा कम है तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो, which is looking a bit better now if I look at this. So this is how it's appearing. Cool. So I don't see any problem with this. So थोड़ा सा हमको एरो के साथ स्ट्रगल हुआ था, which I agree. And बाकी अब इसके बाद जो लास्ट की चीज़ बचती है वो है ये guys, which is very simple, very simple actually. So what we will do, we will simply create a frame, maybe similar to this size. So and let me take screenshot of this so that cool. तो अब हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे और इसको हम कर देते हैं पूरी तरीके से like this, and ये हो जाएगा something like this. ठीक है, इसको हम कर देते हैं 15 पिक्सल और इसको हम कर देते हैं अलाइन. लेट मी सी, थोड़ा सा मुझे लगता है इसको 40 में रहने देते हैं. 40 इज कूल. अब हम इसमें ऐड करेंगे शैडो. Figma का थोड़ा सा इशू है guys, like I simply cannot drag this shadow to, you know, थोड़ा सा I feel like, yeah, maybe this much is fine. Okay, so this is on. हम इसका एक वेरिएशन और बना लेते हैं और हम इसको इधर लेके आते हैं. ठीक है, ये रहेगा ऑफ. ठीक है, अब इसको हम इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं ग्रे में भी, एंड जो इसकी इसको हम कर देते हैं 1, इसको हम कर देते हैं -1. ओके, हम पकड़ के इस दोनों को कर देते हैं कंपोनेंट सेट, प्रोटोटाइप में, ऑन क्लिक, ऑन टैब, यस,
हम इसको बोलेंगे स्मार्ट एनिमेट, इज इन एंड आउट, and keep it like this. Keep the value same guys, I am not changing anything for now. Okay, अब ये आपका कंपोनेंट बन के रेडी है। अब हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया है। अब हम इसको बारी है यहाँ पे लगाने की बेसिकली, तो इसको हम हटा सकते हैं अभी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपका बटन काम भी कर रहा है। विच इज़ कूल। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा साइड में चला गया है वो जो सर्कल है हमारा। लेट्स फिक्स दैट। तो इसको मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल इसको इधर और 1 पिक्सल इसको इधर। लेट्स सी, या दिस इज लुकिंग better now guys. So this is done, this is kind of done. Today we learned how to create component. Okay, आप इसको बोल सकते हैं on and off, on and off टॉगल बटन, ठीक है। आप चाहिए आप एसेट्स में जाके भी ले सकते हैं ऑन एंड ऑफ। यहाँ से आप सिंपली कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे और कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है आपको लगाने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ हाउ दैट वन थिंग इज डन। तो कल से गाइस हम लोग एनिमेशन और ये कंपोनेंट सेट बनाने की क्लासेस चालू करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तक तो मैं स्टैटिक से ये कार्ड बनाता आ रहा था मैं, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी क्रिएटिंग डिजाइंस लाइक दिस। So see you. I hope this is going to be interesting for you and you will be enjoying it. So looking forward to stay connected with you and keep working for you. So मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Thank you so much.